developing and maintaining data platforms for the organizations, and he is helping the organization to collect, to recognize, and to eventually collect data value out of their data, which might have been there for years, but the organization isn't doing anything, or they are just not collecting it. So, I mean, data engineer is basically who has an intuition about the overall data landscape, and what are the company's data assets, and how the company can actually use these assets to serve their business goals and actually drive some growth out of that. So that platform basically, it should be just like a product. Just like I mean, I'm not sure if you guys have heard it, but there's a concept called data products. So data basically, just like we used to develop products, we are now trying to develop a data product, and that basically is that just like any other product, data platforms help us understand our current business processes, and not only that, but if we can also extract new business processes out of this data. So this data platform actually covers how do we collect data. Usually the data collection mechanisms are, due to the diversity and veracity of data along different sources, we first definitely will be cleaning it, or attaching some sort of schema to that data, and then we'll be processing it, of course storing it for the long run, having that data available to users, and just to clarify, the users of this data product and whatever we will be building as data engineers, the user of this product is basically the guys who do any sorts of prescriptive analytics, descriptive analytics, predictive analytics. I mean, just to understand all aspects of our business processes. So these sort of business analysts and data analysts, and even executive management, these are the users for this data. So as data engineers, it's part of our job to make this data available to our users in a really crisp, in a really concise way, so that we then, because what we will be, what the end product of our platform is to have some actionable insights. So people will be taking some serious actions, whatever you guys as data engineers will be telling them. And yeah, so I hope I have tried. Try to engage you guys to give you a flavor and the sort of impact data engineers have in an organization, and why we should be a data engineer. Data, I mean, I don't want to iterate. It's already been a while since this data explosion. But the thing is, organizations don't know what to do with their data. Trust me, I have worked with I think now 4 big clients, and they are actually relying on data engineers or the technical guys to tell them, okay, this is the data, and maybe we can do this, do some sort of optimization, some sort of business process or optimization on top of this data, or we can just have another business process out of that. So I mean, just to elaborate more, it could be that we have logs data coming in from our websites, and the organization is just selling some stuff. But the thing is, over the time they have collected data, and this log data can actually help us understand what are the customer demand, what are customer aspirations and what do they need to buy, and what we can extract from this information is we can actually go ahead and build new products, that because
from this data, from this log data, from this user level, individual event level interactions data, we will be trying to mine what is that the user is needing right now. So maybe we'll be extracting user needs from this data. So in that's the sort of scope, that's the sort of overall perspective of this being data engineer. So I hope I have kind of established interest around this data engineering, and why we should be doing it. There is a lot of jobs. There are a lot of jobs, and there aren't any really good data engineers out there. And specifically because of this, the reason that this job actually demands a lot of understanding of the business side and the overall intuition of this architecture. Because either I'll be discussing the challenges as we move forward, but organization have for the people like kind of taking on this job and doing some exciting work around that. Okay, so can we just have a quick show of hands for how many of you guys have already have quite understanding of what data engineering is and what is a data warehouse? Just raise a hand. Can you hear me? Yeah. Okay, as a feel free to communicate in Urdu, some people are texting me that they're not understand. Sure. Sorry guys. Graduates or soon to graduate guys. I don't think I see a lot of hands, but होती है जिन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं और जो डेटा साइंटिस्ट लोग होते हैं जिन्होंने उसके ऊपर कोई प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करनी होती है, या जस्ट बिजनेस एनालिस्ट गाइस होते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस प्रोसेसेस की रिपोर्टिंग करनी होती है. तो ऐसे लोगों के लिए हम these are the end users of our product, and this is what data engineers do. The thing is, data engineering and data warehousing specifically has been काफी देर से data warehousing जो है वो 70 में मेरा ख्याल है डेटाबेस आया था, रिलेशनल डेटाबेस. तो वहाँ से ऑनवर्ड्स फिर चलते मतलब विदिन 10 to 15 डेज जो है वो हमने डेटा वेयरहाउसिंग का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर लिया था. और हम ये रिपोर्ट्स करते थे, हमें अंदाज़ा हो गया था कि डेटाबेस जो है वो एनालिटिकल पर्पस को सॉल्व नहीं करता, फुलफिल नहीं करता. एक डेटाबेस जो है वो अगर आप अभी क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो डेटाबेस होता है वो राइट ऑप्टिमाइज होता है. तो हमने उसका जो डिज़ाइन होता है वो जो हम सारा कुछ पढ़ते हैं ना कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है और उसको हमने नॉर्मलाइज करना होता है और हर तरह की हमने एनॉमलीज रिमूव करनी होती है. बेसिकली ये हमारा जो डेटाबेस है वो रीड ऑप्टिमाइज नहीं होता, वो राइट ऑप्टिमाइज होता है. हम क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होता है, हम एक बिजनेस प्रोसेस की ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये जो सिस्टम हमने पहले से डेवलप कर लिया था कि क्योंकि वो तो यूज़ नहीं हो सकता, तो वी नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन. अगर आपको आइडिया होगा तो हम डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं और एक डेटा वेयर हाउस सिमिलर डेटा स्टोर बनाते हैं और उस डेटा स्टोर के अंदर डेटा को समझ लेके हम फ्लैट करके रखते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइंट्स ना लगाने पड़े. तो ये एक आर्किटेक्चर बहुत जल्दी हमने डेवलप कर लिया था. बट द थिंग इज ओवर द पास्ट 2 decades
जो डेटा था और जो डेटा के ऊपर जो डेटा के अंदर जो वैल्यू थी और जो ओवरऑल रिलायंस थी डेटा के लिए, वो हमें पता चला पिछले 2 डेकेड्स के अंदर। और हमने फिर रियलाइज किया और हमने फिर डेटा को एट स्केल और हमने स्टोर करना शुरू किया। और हमने कहा कि ओके, हमने इस डेटा को यूज़ करना है और उसको यूजेबल बनाना है। और उसको यूजेबल बनाने के लिए ये हमें फिर पता चला ओके, जब हमने इस स्केल के ऊपर डेटा को, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, हमने स्केल के ऊपर अगर डेटा को यूजेबल बनाना है तो उसके लिए हमें चैलेंजेस मज़ीद फेस करने पड़े। उसके लिए फिर हमने मज़ीद आर्किटेक्चर पैटर्न्स आए और मज़ीद हमने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े और मतलब कोर्स इम्प्लीमेंट किए। और पॉइंट इज कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स डेटा इंजीनियरिंग जो है और स्पेसिफिकली डेटा वेयर हाउसिंग और जो डेटा कल्चर है वो सॉर्ट ऑफ मेच्योर होता गया है। और जैसे जैसे डेटा कल्चर मेच्योर होता गया है वैसे वैसे डेटा से हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई है। और साथ साथ डेटा इटसेल्फ जो है वो उसकी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी और मतलब डिफरेंट तरह का डेटा फॉर्म्स जो हैं वो ग्रो कर गई और इवॉल्व कर गई। तो हमने भी आर्किटेक्चर्स जो हैं उसी तरह से इवॉल्व किए। तो पॉइंट इज के सिंपल आर्किटेक्चर से हमने स्टार्ट किया कि आपके पास एक डेटा बेस होता है। कैन यू सी माय माउस? तो बेसिकली इन द फर्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस होते थे, उसके ऊपर हमने ईआरपी सिस्टम्स बनाए होते थे और उन सिस्टम्स के ऊपर हम ईटीएल लिखते थे, फॉर्म लिखते थे और वहाँ से डेटा गया, उसमें डेटा जाता था और ऑन टॉप ऑफ दैट डेटा हम रिपोर्ट्स बनाते थे। लेकिन इन द सेकंड जनरेशन, इन द सेकंड फेज ऑफ दिस इवोल्यूशन हमारे पास दो चीज़ें हुई। नंबर वन इज एक तो डेटा की फॉर्म्स बढ़ गई। डेटा स्ट्रक्चर्ड पहले था, हम ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ हम वी डिडंट मच बॉदर अबाउट दैट। एक तो अवेयरनेस आई कि ओके देयर इज सम वैल्यू इन मोस्ट ऑफ द डेटा इन सेल्फ इज एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो हमने उसको माइन करना है। और सेकंड जो चैलेंज आया और सेकंड जो था कि हमने इस डेटा के ऊपर एडवांस एनालिटिक्स परफॉर्म करना। तो इस जो इन दो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली के लिए हमने फिर एक सेकंड आर्किटेक्चर इवॉल्व किया और हम डेटा लेक का कॉन्सेप्ट आया। और डेटा लेक के अंदर डेटा लेक को एज ए सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी यूज करना और ऑन टॉप ऑफ दैट डेटा लेक हमने ईटीएल वर्क फ्लोज को बनाना और उन वर्क फ्लोज के एंड के अंदर एक डेटा को सर्व करना इन प्रॉपर वे ताकि उसको प्रॉपरली यूज किया जा सके। तो ये बेसिकली सेकंड फेज ऑफ एनालिटिक्स था। और राइट नाउ वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू द थर्ड फेज, जिसके अंदर हम बेसिकली हमारी जो डेटा लेक इटसेल्फ है वो इस लेवल तक जो है वो ग्रो कर गई, इस लेवल तक हमने उसको स्मार्ट कर लिया। क्योंकि एक्चुअली जो यूजेबिलिटी थी ना उसमें तो डेटाबेस का कोई जवाब नहीं था कभी भी। मैक्सिमम देखिए ना आप, हम सबसे पहला फायदा हम सब जानते होंगे, आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट, बट हम रियल वर्ल्ड को हम एज इज मॉडल कर सकते हैं एक रिलेशनल मॉडल के अंदर। तो डेटाबेस इटसेल्फ को अंडरस्टैंड करना, उसको यूज करना, रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करना बहुत इजी हो गया था। डेटाबेस तो बहुत इजी था। फिर उसके अंदर ट्रांजैक्शंस थी कि हम सब पढ़ते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हमारी ऐसे प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो डेटा इंटेग्रिटी को और आइसोलेशन को, ड्यूरेबिलिटी को, कंसिस्टेंसी को, एटोमिसिटी भी होती है उसमें, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इस लेवल की इंटेग्रिटी जो थी वो हमें दोबारा कभी नहीं मिली जब से हमने डेटाबेसिस को छोड़ा। तो द पॉइंट इज कि सिंस देन हम डेटा लेक को इस लेवल तक हम स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं कि वो एक बिल्कुल उसमें हम वही सारे बेनिफिट्स जो एक डेटाबेस में होते हैं और जो चैलेंजेस डेटाबेस में थे उनको सॉल्व करें और जो बेनिफिट्स जो थे वहाँ पर थे और डेटाबेस में थे उनको एज इज जो है वो डेटा लेक में इम्प्लीमेंट करें। तो राइट नाउ मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो डेटा लेक है जो कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डेटा होती है उसके अंदर ही हम अगर रीड करना है तो हम सीक्वल लाइक इंटरफेसेस हों, हम ट्रांजैक्शनबिलिटी हो यानी कि हम ओवरराइट कर सकें फाइल्स को। और सॉरी गाइस,
बिल्कुल। तो और उसमें जो जो लेक हाउस प्लेटफॉर्म है उसमें बेसिकली हम डायरेक्टली अपने जो हमारा जो डेटा लेक इटसेल्फ है उसको हम इतना मैच्योर कर रहे होंगे, वो इस लेवल तक हमारा लिए रिलायबल होगा कि हम डायरेक्टली उसके ऊपर वो इतना इजी टू यूज होगा कि हम डायरेक्टली उसके ऊपर BI रिपोर्ट्स और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कर सकते होंगे। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ 3 phases of data warehousing or data platform architecture that we have gone through or we are going through it. So the next is okay. So what is basically what a data engineer should know, and और जो एक data engineer है वो उसको हम और जो इस ट्रेनिंग में जिसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो वेबिनार किया जा रहा है, जो इसमें सिखाया जाएगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि डेटा इंजीनियर्स क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है, वो सॉर्ट ऑफ किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्या एक हाई लेवल आर्किटेक्चर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती हैं टू बिल्ड देयर डेटा। तो स्टार्टिंग हम ऑफ कोर्स डेटा इंजीनियरिंग का थोड़ा सा डीप डाउन इंट्रोडक्शन होगा कि एज इटसेल्फ जो है वो डेटा इंजीनियर्स की जॉब जो है वो क्या होती है। उसमें सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड नहीं होता, उसमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें एक ETL, क्योंकि यूजली ETL पाइपलाइंस बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत वाइडली ग्रो करती हैं, तो हमें फ्रेमवर्क के ऊपर रिलाई करना। बट पॉइंट इज कि हम थोड़ा सा डीप डाउन इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है। फिर ऑफ कोर्स सीक्वल जो है वो इस प्लेनेट की आई थिंक द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है, बीइंग अ डेक्लेरेटिव लैंग्वेज। सीक्वल की पावर हर इंसान के पास आई थिंक होनी चाहिए who is dealing with data or who might have to deal with data. Here of course the understanding of this data platform architecture के बेसिकली प्लेटफॉर्म जो आर्किटेक्चर, मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी की हैं अभी कि किस तरह से हमारे चैलेंजेस थे और हम इस तरह से इनकी चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे होते हैं। बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ high level kind of bullet points that I have written here, but overall एक डेटा इंजीनियर को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेटा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसके अंदर उसका एंड गोल क्या होता है और उसके हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके अंदर क्या ऑप्टिमाइजेशंस करनी होती हैं। हम ऐसा नहीं होता कि हम एक सोल्यूशन सीख लें, एक आर्किटेक्चर सीख लें और वही लग जाए हर जगह पे। और हम इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे लिए हमारा जो डेटा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर है और जो डेटा इंजीनियर है सेल्फ, उनको उनके अंदर एक डिज़ाइन इंट्यूशन होनी चाहिए कि एक डेटा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कैसे करना है। ऑफ कोर्स स्टार्ट हम करेंगे जस्ट अ क्विक ओवरव्यू। एक्चुअली अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आई मीन द ट्रेनिंग की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रही होंगी कि आप लोग जो हमें ज्वाइन करेंगे वो उनकी बेसिकली व्हाट डू दे वांट, उनका क्या लेवल है और क्या अंडरस्टैंडिंग है। बट द आइडिया, ओवरऑल आइडिया फ्रॉम आवर एंड इज कि चूंकि डेटा मॉडलिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी इंट्यूशन होना, इसका एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्विकली डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे OLTP सिस्टम्स के हवाले से स्पेसिफिकली, जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। फिर ऑफ कोर्स डायमेंशनल डेटा प्लेटफॉर्म के हवाले से, डेटा प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर अगर रिलेशनल डेटा प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए हम कौन सी मॉडलिंग, हमारे कौन से मॉडलिंग आर्किटेक्चर्स होते हैं, स्कीमास होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फिर उन स्कीमास को हम एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं टू सर्व इनसाइट्स, टू सर्व एग्रीगेटेड इनसाइट्स ओवर द टाइम, ओवर डिफरेंट डायमेंशन का मतलब यहाँ पर यह है कि बिजनेस प्रोसेस है ना, अगर तो वो बेसिकली लेट्स जस्ट से कि कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन आवर वेबसाइट, तो ये एक बिजनेस प्रोसेस है। तो अब इसके अंदर कस्टमर जो है वो एक डायमेंशन है, एक हमारे बिजनेस प्रोसेस का एक एट्रीब्यूट है। तो इसी बेसिकली हम अपने कोशिश हमारी ये होती है डेटा प्लेटफॉर्म के अंदर
बेसिक रिक्वायरमेंट डेटा प्लेटफॉर्म की ये होती है कि आपको एक बिजनेस प्रोसेस या ऑफकोर्स सारे बिजनेस प्रोसेस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है उनकी उनको डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर एनालाइज करना आना चाहिए। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल करना है कि वो डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर एनालाइज कर सके अपने बिजनेस प्रोसेस को। उसके लिए हम मॉडलिंग जिस तरह से करते हैं, वेयर हाउसिंग इनफैक्ट अब मॉडलिंग हमने कर ली वेयर हाउस की, उसके अंदर डेटा लेके आना है, डेटा सोर्सेज के हिसाब से एक डेटा पाइपलाइन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, डिजाइन करना, डेटा सोर्सेज, फिर डेटा वॉल्यूम, फिर डेटा वेलोसिटी, इन तीनों चीजों के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू स्टार्ट विद इनके हिसाब से हमने पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेटा प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और उसको ऑप्टिमाइज करना। फिर ऑफ कोर्स एससीपी टाइप हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये भी आपको बताएंगे हमारे साथ दानिश जो हैं। फिर नो सीक्वल डेटा मॉडलिंग, जो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस के साथ जो चैलेंजेस हैं वो सॉल्व करने के लिए हम नो सीक्वल के ऊपर गए। और नो सीक्वल की डेटा मॉडलिंग कैसे होती है, नो सीक्वल की डेटा मॉडलिंग इज अ होल न्यू कंप्लीटली सेपरेट थिंग, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल डिजाइन कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, मेरी पर्सनली ये कोशिश होगी, मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर आप डिजाइन करें और आपके पास आपको मैं कोशिश करूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग दे दूँ कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स हो तो आप एक डेटा प्लेटफॉर्म जो है वो आपके माइंड में एक सॉर्ट ऑफ पिक्चर बननी चाहिए कि इसको एक अच्छा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो एक अच्छा डिज़ाइन डेटा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कैसा होगा। फिर ऑफ कोर्स डेटा एक्सेस है, डेटा एक्सेस हम इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स मैं आपको गाइडलाइंस कोशिश करूंगा कि दे दूं कि डेटा एक्सेस को अगर डेटा एक्सेस का मतलब ये है कि हर बंदे को सारे के सारे डेटा की एक्सेस तो नहीं दे सकते ना। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफिकली इसी मसले के लिए तो उन्होंने डेटा मार्क्स बनाते हैं लोग और वो कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट अपना डेटा मेंटेन करे और अपने हिसाब से चले। हम ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज तो हम इसको डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको ओवरऑल इंट्यूशन दे दूंगा कि आपको आइडिया हो जाएगा तो कि दिस इज व्हाट इट इज। फिर इंटीग्रेशन आ गई, डेटा इंटीग्रेशन के दानिश बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। ओवरऑल द टेक अवे फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन साइड ऑफ थिंग्स इज के आपको एक कोशिश ये होगी कि आपको एक एंड टू एंड एक प्लेटफॉर्म आप डिजाइन कर पाएँ फ्रॉम स्क्रैच। और इसमें आप डिफरेंट जितने भी आपको टूल्स यूज करने पड़ते हैं, आप कौन से टूल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, कौन से टूल के क्या चैलेंजेस हैं, कौन से जगह पे कौन सा किस तरह के डेटा को किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करना है। तो मैं अभी दानिश से प्रेस करूँगा वो थोड़ा सा आपको डीप डाउन इनसाइड द एसएस, क्योंकि हम यहाँ पे एसएसआईएससी को सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो वो आपको थोड़ा गाइड कर देंगे कि हम बेसिकली उसमें क्या कवर कर रहे होंगे। और Danish who mind? Yes. Yeah, sure. Assalamu alaikum, everyone. Danish here. I'm an ETL consultant and tech consulting, and we'll be covering SSIS over here. So I need a show of hands. कितने लोगों को पता है कि SSIS basically है क्या and what is it used for? Anyone? Pipeline वगैरह करने के लिए होता है? Yes. Right. Okay. Should we move forward? Sure. Right, I think you have no idea. Okay, guys. SSIS actually we have different tools. ETL के हमारे पास काफी सारे tools होते हैं. But since we are covering the Microsoft stack over here, तो जो SQL या Microsoft की तरफ से हमारे पास एक tool है जो free है and anyone can use it. वो SSIS है. I'll be sharing करेंगे the messages as well, जहाँ से आप इसको download और install कर सकते हैं. Basically, it is used for extracting the data from different sources. अब अगर आपके पास let's suppose flat files मौजूद हैं आपके PC में, या आपके पास कोई इस तरह की रिपोर्टिंग है आपके इसमें ऑफिसेज में जहाँ पे आपको फ्लैट फाइल्स उठा के डायरेक्टली आपके डेटाबेसेस में आपको स्टोर करनी हो, बट आप उसको
वो देखें डेटाबेस में स्टोर करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप उन वैल्यूज को हार्ड कोड करें इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूरी, इंसर्ट करके वैल्यूज लिख दें और उसमें वो सारी चीज़ें रखें एंड यू स्टार्ट इंसर्टिंग इट. But you can't do that if you have very large Excel sheets or very large text files. So एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल है जिसके लिए हम एक्सरसाइज लेते हैं. तो इसमें आप अगर फ्लैट फाइल के कनेक्शंस बिल्ड करोगे या एक्सेल के कनेक्शंस बिल्ड करोगे, you can easily move that data from a flat file or from an Excel file to the relational database, or you can even go for SPSS file systems. So this is basically the use of SSIS and बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो SSIS के अंदर हैं. अब हमारी जिस तरह की ETLs चलती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, if there are any data engineers over here, तो वहाँ पे we have scheduled tasks जो developers बना के off को देते हैं, and the operations is actually responsible for handling those ETLs on a daily basis. आपके पास कहीं डेटा है जो सोर्सेज पे गिरता है और उन सोर्सेज पे गिरने के बाद आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे पुल करते हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस और फॉर कलेक्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा. फॉर दैट पर्पस वी यूज SSIs. SSIs का एक एडवांटेज कह लें, डिसएडवांटेज कह लें, वो ये है कि इट इज़ इन मेमोरी, यानी आपकी जो पीसी की रिसोर्सेज है वो सारी यूज करते हैं. यू कैन इवन लोड इट ऑन द SQL सर्वर एज वेल, बट अगर आप अपने लोकल पीसी पे भी पैकेज डिज़ाइन करके डेवलप करके यूटिलाइज कर सकते हो सारे कनेक्शंस. इसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, सेंस अगर आपके पीसी में मेमोरी जो है वो कम है तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ स्पीड एंड फॉर द डेटा मूवमेंट. बट अगर आपके पास एक वेरी गुड पीसी है देन यू कैन डू दैट. तो ये एक इसका एस्पेक्ट है. सेकेंड, आप अपनी पूरी ETLs इस पे schedule कर सकते हैं. You can even write SQL queries on it. You can create data movement tasks from different sources, even from different databases. यानी अगर आप डायरेक्टली Oracle से SQL सर्वर पे डेटा मूव करना चाह रहे हैं तो आपको बीच में सिर्फ एक मीडियम की ज़रूरत है, वो SSIS होगा. You can create connections from it. Oracle में जैसे आप कोई IP दें उसके थ्रू connections build up कर सकते हैं. SQL सर्वर पे आप उसको एक IP दें and SSIS would be the medium जिसमें आप डेटा की मूवमेंट कर सकते हैं. देन बिफोर डेटा मूवमेंट आप ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो भी अप्लाई कर सकते हो. अब्दुल्ला, इसमें वॉइस क्लियर? आपने मैसेज किया कि आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है. हेलो जी, ओके, ऑलराइट. तो बेसिकली इसके अंदर आप बिटवीन डिफरेंट डेटाबेसेस जो है वो डेटा मूवमेंट भी कर सकते हो और आप उससे भी डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो यूजिंग दैट. यानी अगर इफ यू राइट एन SQL query on the source, you can extract that data directly into an Excel file, in a flat file, in an XML file. और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप डेटा की लॉगिंग भी कर सकते हो, आप उसके अंदर एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो. ट्रांसफॉर्मेशंस, रन टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डेटा भी इसके अंदर कंडक्ट हो सकती हैं क्वाइट इजीली. सो दैट इज व्हाट वी विल बी कवरिंग इन द कोर्स ऑफ SSIS. अजहर, एनीथिंग एल्स? बिल्कुल. इसके बाद SSIS जो है, द थिंग इज हमने लर्न किया है द हार्ड वे कि आप अब एक टूल यूज करना जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूल सिखाना और सीखना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज कि एक टूल है, आप उसको जरा सा जो है वो आप उसके अंदर कोई ट्वीकिंग किए बगैर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपका वर्कलोड इतना, और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इतना बढ़ जाता है कि आपके लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप गिव अप कर देते हो और आप कहते हो कि ये टूल ही सही नहीं है. बट द थिंग इज एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि we don't have an understanding of how that tool works. Recording stopped. वो टूल काम कैसे करता है और उस टूल के बेसिकली क्या कैवियट्स आ सकते हैं. एक टूल अगर हम उसको यूज कर रहे हैं किसी भी जो है वो वर्कफ्लो के लिए, किसी भी किस्म की डेटा मूवमेंट, इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए,
वी शुड नो कि वो टूल की कैपेबिलिटीज क्या है, उस टूल के एक्चुअल डिजाइन कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, तो कुछ हम इस बारे में बात करेंगे। Recording in progress. फिर ऑफ कोर्स हम डेटा एजो स्टैक, क्योंकि डेफिनेटली किसी ने सवाल भी पूछा हुआ है कि डेटा वॉल्यूम इटसेल्फ जो है वो ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेफिनेटली जैसे डेटा साइंस ने आके हर बंदे के जहन को पकड़ लिया था ना, वैसे ही बेसिकली बिग डेटा ने पकड़ा हुआ है। हर बंदा जो कहता है हमने वो बिग डेटा करना है, तो मैंने देखा है कि लोगों की रिक्वायरमेंट होती नहीं है बिग डेटा वाली, बट स्टिल दे वांट बिग डेटा। तो but still, I mean, the point is, the big data actually for the most of the organizations, big data actually matters, and we as the data engineers should be well equipped to handle data at scale. Data, in fact, in the data processing, all sorts of transformations, we should be able to handle on scale. तो इसलिए हम एजो डेटा फैक्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। एजो डेटा फैक्ट्री इटसेल्फ जो है वो हमें स्पार्क क्लस्टर्स के ऊपर एबिलिटी देता है कि हम डेटा इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी जिस भी तरह की डेटा के ऑपरेशन है, इनफैक्ट हम मशीन लर्निंग के मॉडल की ट्रेनिंग को अगर हम करना चाह रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस और समथिंग लाइक दैट, क्वालिटी जिस तरह का भी हम डेटा वर्कफ्लो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, हम उस तरह का डेटा वर्कफ्लो डेटा फैक्ट्री के अंदर बना सकते हैं। एंड द डिफरेंस इज कि ये इट विल हैंडल बिग डेटा, और ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर एक्सिक्यूट करता होगा और उसके अंदर चैलेंजेस नहीं आएंगे। फिर ऑफ कोर्स ओवरऑल डिप्लॉयमेंट के हवाले से हम देखेंगे कि SSIS जो है उसकी डिप्लॉयमेंट जब हम देखेंगे ना किस तरह से हो सकती है, तो उसमें भी एजो डेटा फैक्ट्री इज वन ऑफ द ऑप्शन, या आप अपने SSIS के सॉल्यूशंस को आप डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन एन एजो डेटा फैक्ट्री इन दैट वे, या फिर वो पैकेजेस जो आपने पहले से बनाए हुए हैं वो लिफ्ट एंड शिफ्ट के थ्रू आप उनको चला सकते हैं। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ ओवरऑल फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइड। नाउ आई विल हैंड ओवर टू Musfira. She will be talking about the business intelligence side of thing, and how do we actually consume this data, how this actually make this data speak for its purpose. So let's just अगर आप स्लाइड आगे बढ़ा दें। sure, just give me. So basically, what is business intelligence? So business intelligence tools जो है वो आपको basically help करते हैं to change the data into useful information, and then that information can be changed into knowledge, and then the organization can use those guidelines to realize कि अच्छा what action should we take next. एक business analyst का जो purpose होता है कि वो जो डेटा आ रहा है, बेसिकली कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस होता है, डेटा पड़ा हुआ है, बट दे डोंट नो कि किस तरीके से यूटिलाइज करना होता है। सो दैट्स व्हाई दे हायर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट, ताकि वो उस डेटा को यूज करके एक इंसाइट दे सके कि दिस इज हाउ वी शुड go forward. So technologies for gathering, storing, and analyzing, providing access to data helps enterprise users make better business decisions. इसके 4 processes होते हैं. First of all, to get the data which is already there, जो कंपनी के पास already होता है, and then model it and create visualization, and then share it with the rest of the people who are working in the organization. It depends on from organization to organization कि वो किस तरह अपना डेटा शेयर करना चाह रहे हैं, किन लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। बिकॉज व्हेन यू वर्किंग एज अ BI एनालिस्ट यू शुड नो कि हर डेटा हर किसी के लिए नहीं होता। डेटा इज लाइक अ पावरफुल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट इट। सो यू शुड ऑलवेज नो दैट व्हाट योर ऑडियंस इज एंड क्रिएट द डैशबोर्ड your dashboard and the reports according to the audience that you would be providing insights for. Ajay, can you move towards the next slide, please? So,
Why BI? Because BI, it helps us evaluate what happened in the past, what are the current trends, कि past trends आपके क्या थे, current trends क्या थे, और हम अपने business से क्या expect कर सकते हैं future में. For example, if you have an organization that is selling some sort of product, so through BI we can evaluate कि उसकी past sales कितनी थी और वो अपने future में currently how is it performing, like according to the market. अगर आप एक product बेच रहे हो, ठीक है, so according to the market trend, are you performing good? Let's say in COVID time, a lot of people are performing bad, right? But you need to see here, are you performing better than the mark or are you performing worse than the mark? So through that, you can evaluate that what action should be taken. So they even recommend action, but it's in terms with you or with the person who's responsible. You set up a team that this is how your friend is going. So now we need to look and take an action. कि अब हमें क्या करना चाहिए. And it's even to realize the future trends. If our performance will be like in 2020 तक हमारी sales जो है वो इतनी हो जाएगी. After next slide please. BI applications and technologies can help companies analyze changing trends in market size. Like I said, for example, are our sales above market or below market? Are they performing better than our competitors or not? Because बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई मार्केट होती है तो उसमें competitor data भी हमारे पास पड़ा हुआ था. So if you have the competitor data, then that's a very good insight into the market space. Like how are you performing and how can you do better? So changes in customer behavior, spending trends, you can identify in these the other sudden decline in customer behavior में या फिर sudden increase है. So you can basically identify each and everything. You can even have a deep insight into that using all the data that is available. Performance of employees, it can be used to track the sales performance of a sales team. For example, कि अगर आप एक सेल्स की टीम है आपके पास सेल्स रेप, तो उनकी जो इंसेंटिव, यू कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड टू कैलकुलेट द इंसेंटिव्स और जैसे बाय ईयरली इंसेंटिव कैलकुलेशन होती है. So instead of that being a manual process, you can create dashboards for the company to give them a better insight कि performance, employee CSC, ताकि किसी को कोई डाउट भी नहीं हो कि जो हमने काम किया हमें उसके बेसिस पे इंसेंटिव मिल रहा है. These are just ideas that how dashboards can be used to help the organization. And then customers' preferences. What are the preferences of customers? If you're, for example, launching a new product, so are the customers satisfied with it? Is it performing that well or not? Customer engagement as well. And sometimes you have the information. For example, if you have the data of the emails, if you're a company who is sending emails to the customers, right? And you have the data of how many customers are opening the email, how many customers are actually clicking on the email. So through that, you can create a dashboard to analyze कि अब आप जो emails भेज रहे हो, आप जो promotions कर रहे हो, are they even being helpful or not? या फिर क्या उनकी promotion का कितना impact था? So all this data can be used to make a better insight using dashboards. And then I think next slide please. Company needs to have accurate and up-to-date information on customer preference so that the company can quickly adapt to their changing demands. BI applications can help managers to be better informed about actions that a company's competitors are taking. It all depends on the kind of data you have. If you have the data of the competitors, you can recommend them that, this is the new strategy that they're using. So, we can also come up with something else. It helps analysts and managers to determine which adjustments are more likely to respond to changing trends. It can help companies develop a more consistent database decision which can produce better results than making business decisions by guesswork. बहुत सारी companies में वो लोग जो है
डेटा यूज करने के बगैर प्रीवियस टेंस बिजनेस के बजाय दे आर यूजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ गेस वर्क कि अब हम ये कर लेते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एक्सपीरियंस लाइक बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं कंपनीज में तो वो अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही बोल रहे होते हैं कि यू नो लेट्स डू दिस बट अगर आपके पास बट इफ यू जस्ट यूजिंग योर वर्ड्स राइट तो फिर इतना रिलायबल नहीं होता बट इफ यू हैव समथिंग ऑन द बैक अगर आपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज की एक डैशबोर्ड यूज किया हुआ पीछे स्लाइड में अगर आप दिखा रहे हो यू नो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट यू शुड टेक दिस एक्शन because I then you have something to back you up. You have the data to like to back you up. This is the reason why I'm saying. And if you have something to back you up, then obviously people are going to believe in you more. Okay, yes, you're right. You have something to back you up. That is the reason कि आप बोल रहे हो कि हम ये action लेते हैं. After website please. Visualization gives you answers to the questions you didn't even know you had. बहुत सारी कंपनीज के पास जब वो डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट हायर करते हैं तो जो डेटा की इंसाइट उनके पास आ रही होती है वो उनको पता भी नहीं होता कि अच्छा हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट डेटा था और हमें पता भी नहीं था कि यू नो कि इसके थ्रू हम लोग ये एनालाइज कर सकते थे. So today's world is full of data. In every second, 37 terabytes data is being created. It's an approximate amount. Data visualization should be an essential part of business strategy. The process of collecting data and transforming data into meaningful visualizations will reduce costs and help teams make accurate business decisions. The tools we are going to be using are Tableau. हम लोग Tableau और Power BI यूज कर रहे होंगे basically. I know these are like costly tools, but pehले companies भी बहुत hesitate करती थी when they're using third-party software and you know that these tools are costly. But अगर आप future की perspective से रख के सोचो तो in long term, it's a good long-term investment. It will actually reduce the cost and help teams make accurate business decisions. You will have something to back you up basically. तो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज जो होती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे यूज Tableau और पावर BI जो है वो इट डिपेंड्स इवन स्मॉल कंपनीज यूज इट इवन लार्ज कंपनीज यूज इट सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. पावर BI लाइक पावर BI कैन कम हर स्केल की कंपनी के हिसाब से पर ज़्यादातर कंपनीज जो है वो Tableau यूज करती है. Tableau की कम्युनिटी क्योंकि Tableau पुराना है बहुत पावर BI की जो है वो कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है. आपको इजीली आंसर इफ यू पोस्ट अ क्वेश्चन आपको इजीली आंसर भी मिल जाते हैं. सो द कम्युनिटी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. एंड देन अदर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So BI dashboard can provide a customized snapshot of daily operations. So sometimes you have the data on daily basis. Sometimes you're getting the data on daily basis or monthly basis. So basically, अगर आपको डैशबोर्ड बनाना आता है ना तो डेटा को यूज करते हुए आप एक ही डैशबोर्ड को इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो आपको डेली बेसिस पे भी डेटा दिखा रहा है, मंथली बेसिस पे भी दिखा रहा है और डेली बेसिस पे दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ बाय जस्ट यूजिंग अ फिल्टर. तो एक गुड BI एनालिस्ट है, गुड डेटा एनालिस्ट जो डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं एक अच्छी डैशबोर्ड की जो वो होती है ना फायदा वो ये होता है कि इट हैज इंफॉर्मेशन. इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट हैज द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड. और उसके फिल्टर्स होते हैं कि जिस मतलब जो बंदा जो यूज करना चाह रहा है वो अकॉर्डिंग टू द फिल्टर्स वो सेट कर सके. We assist the users in identifying the problems and source of those problems, as well as providing valuable up-to-date information about financial results, sales, and other critical information all in one place. BI reports deliver web-based BI reports to anyone or in the organization within minutes. The BI suite is simple to use, practical, and implement affordable every organization. Dashboards are always according to what the organization needs. You should know how to create a dashboard, but dashboard create करने से पहले you should always set up a meeting with the people
that will be using the dashboard. अगर आपका कोई CEO आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई हेड आपका डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, you should always go to that person and you should ask that person कि आप देखना क्या चाह रहे हो, what do you want to visualize, क्योंकि एक बेस्ट डैशबोर्ड तब बनेगा जब आपको बिजनेस आइडिया जो है क्लियर होएगा कि दैट इज व्हाट आई वांट टू विजुलाइज. डिफरेंट डैशबोर्ड बेसिकली डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है. बहुत सारे आप when you know how to use Tableau and Power BI, you can explore a lot more and you can provide useful insights in your company. Personally, since I learned these tools hands-on, a lot of recruiters started approaching me on LinkedIn. And these are the tools that are in demand throughout the world, and especially in Pakistan because it's a commercial field. इस फील्ड की जॉब ज्यादा है और इस फील्ड में जो लोग जिनको ये स्किल आती है वो बेसिकली कम है. तो पहले मुझे इतने ज्यादा रिक्रूटर्स अप्रोच नहीं करते थे व्हेन आई जस्ट गॉट बैचलर्स डिग्री या फिर व्हेन आई एनरोल्ड इनटू मास्टर्स डिग्री. बट जब मैंने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की, व्हेन आई डिड एक्स्ट्रा कोर्सेज लाइक टैब्लू पे, डेटा साइंस पे, पाइथन पे, SQL जब मैंने सीखी, so a lot of companies started approaching me on LinkedIn. मैंने सीधी तक नहीं सीखी and a lot of companies started approaching me because I think these skills are really important and ये अभी undervalued है. In a year or two इनकी और job market जो है वो increase होएगी. So after can we move towards the next slide please? So dashboard level. Not all dashboards are for all audience. When creating a dashboard, it is critical to understand the consumers of the information being reported and the common audiences that will be reviewing dashboards. Okay, so basically dashboard and Tableau और Power BI के अंदर ऑप्शन होता है कि आप अपनी ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. So एक dashboard से we can create different views for different levels of organization because if you're working for a huge organization, तो आपके उसके अंदर हर organization की different parts होते हैं और हर किसी के पास access नहीं होता. So you should know how to limit the access और आपको हमेशा dashboard अपनी audience के हिसाब से बनाना चाहिए. I think we will move to the next slide please. Okay. While learning to create dashboards, हम जो है we will be keeping these 5 points in mind. Being a data analyst, you should know सबसे ज़्यादा request कौन से data की आ रही है. It's usually कि a lot of times while working at my organization, मुझसे लोग बहुत दफा डेटा मांग रहे थे, आप हमें ये वाला डेटा भेज दो, आप हमें ये वाला डेटा भेज दो. So that is when I used to realize कि अच्छा अब इस डेटा जो ये वाला डेटा है इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस डेटा का हमें डैशबोर्ड बनाना चाहिए ताकि इंस्टेड ऑफ आस्किंग ये अगेन एंड अगेन ताकि मुझे वही काम फिर से नहीं करना पड़े, आई कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड ताकि आप वहां से जाके उनको जो इंफॉर्मेशन जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो वहां से जाके एक्सट्रैक्ट कर लें. बिकॉज देयर आर ऑप्शंस ऑन डैशबोर्ड that you can filter data and then you can extract the data according to your needs. The 5 keys of effective dashboard delivery are purpose. Your objectives should be clear. You should know the business requirements. Why are you creating this dashboard? क्या फायदा है इससे? उसके अलावा and basically draw attention to relevant trends and pinpoints. The comparison or balance the content. ज्यादा डैशबोर्ड पे या ना तो ज्यादा नेगेटिव कंटेंट तो डैशबोर्ड पे ना ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट है. ज्यादा नेगेटिव कंटेंट तो होता ही नहीं बिकॉज इस तरीके से योर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट डीमोटिवेटेड. प्रोसेस aligned before starting developing the dashboard, you should always align the requirements with the available technology or always deliver a prototype to demonstrate the art of possible. What if the organization is asking something impossible, right? जो कि आपको Power BI और Tableau support नहीं कर सकता. So you should always have the requirements first and tell them कि this is something I can make. इसके लिए हमारे पास available technology, but this is not something that is possible. So you should always aim for something that is possible. Participants, like I said, target select groups as audience, not the whole organization. All the data
is not for everyone. Data is not nice to have. अगर किसी की जरूरत नहीं है तो उसको नहीं देना है. If it doesn't help the user arrive at actionable insight, then that person should not have access to it. Full user-friendly, engaging, and easy to interface will make the user want to consult this dashboard frequently. डैशबोर्ड भी should be in such a way ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि किसी को, क्योंकि डैशबोर्ड भी in such a way कि जिसको टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं, they don't know how to use the stuff, वो easily navigate कर सके. They should be able to understand कि okay, this is how I should use it. Encourage interaction, drill down capabilities होनी चाहिए. अगर एक टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, you can double click it या फिर drill down आप कर लो ताकि it drops down into further explanation of the data. Before, जैसे कि within an organization, whenever I used to develop a dashboard, तो उसमें क्या होता था कि आपको डैशबोर्ड जब डेवलप करते हो तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है फॉर द कंपनी ताकि दे नो हाउ टू यूज द डैशबोर्ड. तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव सम अदर कमिटमेंट्स. So your dashboard should be in such a way that even if people are not able to attend that onboarding dashboard meeting, so without any training, they should be able to understand it. Okay, why is this dashboard? What data can I get from this dashboard? And then principles, trust and integrity. Data should be secure, validated against the source system. 5 minutes principle. Within five principles सबसे ज़्यादा important है. Within 5 minutes, users should be able to review the dashboard, understand the metrics, trends, and gather the data that they need, and should be on their way. इनको ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं पड़े. 5 minutes के अंदर आप अपना देखो कि अच्छा ये ट्रेंड आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. Gather the data, and then you're on your way. So, as the next slide, please. So these are the two tools that we'll be using, Power BI and Tableau. Power BI का जो desktop version है basically वो free है. Tableau का जो है वो Tableau का free version नहीं है, but you have 14 days का trial version. For students, Tableau की अच्छी बात है कि for students Tableau जो है वो free है. When I enrolled into my masters, तो मुझे 1 year का Tableau free मिला था. That's how I started learning and getting to know it. For students, Power BI का कोई प्लान नहीं है. Power BI का डेस्कटॉप जो है वो फ्री है, बट ऑब्वियसली इट इज रिस्ट्रिक्टेड. उसमें आपके पास बहुत सारे फीचर्स नहीं है जो एक पेड वर्जन में होता है. एंड देन Tableau का जो है you have Tableau is more expensive. अगर if you in terms of price देखो तो Tableau is more expensive. But inside the आपको Tableau is basically more easy to use. इसमें drag and drop options जो है वो बहुत ज़्यादा है. The user interface is बहुत अच्छा है. So these are the two tools that we'll be using. That's it from my side. Thank you so much. बस एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स हम Power BI और Tableau दोनों यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्विंग आवर कस्टमर विद इनसाइट्स. तो उसमें पॉइंट है इसके सीखने के लिए हमें एज इन अभी वैसे तो अच्छा किया है, मुस्लिम ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि कॉस्ट का, बट हम पॉइंट इसके हमें सीखना होता है. तो हम सीखने के लिए जैसे बताया कि वी डोंट रियली नीड टू केयर अबाउट एनी अदर स्टफ. जस्ट हमारे पास पावर BI डेस्कटॉप हो तो हम तकरीबन सब कुछ कर सकते हैं. पावर BI की रिपोर्ट्स एटलीस्ट रिपोर्ट लेवल के ऊपर तो हम सब कुछ कर सकते हैं. सिमिलरली डेस्कटॉप जो है वो Tableau डेस्कटॉप जो है वो 15 डेज के ट्रायल्स के साथ बंदा सीख सकता है, ऑफ कोर्स के लिए कर सकता है. बट ऑफ कोर्स जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैव दिस resources available. So I mean we don't really, I mean this isn't something that we should be worrying about. But thank you again. तो हम अब ऐसे करते हैं, आपको ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि मुस्लिम ने बड़े अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर दिया. हमने कोशिश की है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ओवरऑल जो है वो क्या पूरा बट कोर्स इन डेटा इंजीनियरिंग एंड हम एक डेटा इंजीनियर से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं. BI डेवलपर, एक डेटा इंजीनियर और एक BI डेवलपर का जो एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आज आप देखिएगा
मैं तो मुझे तो नजर आना शुरू हो गई है, बट आप भी अगर देखेंगे तो आपको फुल स्टैक डेटा डेवलपर की आजकल पोजीशन नजर आना शुरू हो गई है। और एक्चुअली फुल स्टैक कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि Recording stopped. Recording in progress. हम क्वेश्चन जो है अजहर, आपके माइक में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। Azhar, we are getting a little bit of distortion from your end. Cherola papala, papala negrola. Cherola bache. So, koi bache. ओके, तो अब आपके हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके 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 ओके, हम डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर SSIS के ऊपर बना सकते हैं या नहीं? फारिश ने सवाल पूछा हुआ है। द थिंग इज, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर जो है ना, समझ लें कि आप अपने जिनके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, मोस्टली कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, तो आप अपने जिम्मे ये, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो प्रोडक्ट होती है, जो जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। और इसी तरह से डेटा इंजीनियर की जो प्रोडक्ट होती है, जो उसका एंड गोल होता है, वो बेसिकली डेटा बना रहा होता है। ही और शी इज कुकिंग डेटा। तो उस जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ टूल्स यूज करता है, वैसे ही डेटा इंजीनियर कुछ टूल्स यूज करता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर का पहले डिजाइन बनता है, वैसे ही एक डेटा प्लेटफॉर्म का एक डिजाइन बनता है। जो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर है, वो एक समझ लीजिए ब्लूप्रिंट है कि एक डेटा जो है, हमारे जो डेटा प्लेटफॉर्म है, उसका एक ब्लूप्रिंट है, उसका एक आर्किटेक्चरल, जिसके अंदर डेटा, हमारा डेटा स्टोर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो रिपोजिटरी है डेटा की, उसका एक ब्लूप्रिंट है। और SSIS एक टूल है। बिल्कुल हम SSIS को यूज करके एक डेटा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्चर है ऑफ कोर्स। फिर डेटा बेस एंड बिग डेटा। डेटा बेस जो है, उसको हम यूँ समझ लें कि आसान अल्फाज में, आपको वैसे मतलब जो भी आप, मेरे ख्याल में आपको अंडरस्टैंडिंग है कि डेटाबेस क्या है। लेट्स जस्ट से इट्स अ बैग दैट कैन कंटेन सम थिंग्स, और जो बिग डेटा है वो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ट्रेडिशनली यूज किए जाने वाले बैग्स जो हैं वो सपोर्ट ना कर सकते हों, उनको हम उसको बेसिकली दैट्स बिग डेटा इज इन इंक्लूशन। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। बेसिकली एक सिस्टम होता है, जो DBMS होता है, जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड करके देता है, मेंटेन करके देता है, जिसके अंदर सारा डेटा इन टर्म्स ऑफ फाइल स्टोर हुआ होता है, और वो हमें रीड करने देता है, हमें राइट करने देता है। बट ऑन द अदर हैंड, बिग डेटा इज जस्ट डेटा, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है कि उस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी इतनी जल्दी बढ़ रहा होता है, इतनी जल्दी क्रिएट हो रहा होता है, हमारे सिस्टम जितनी जल्दी डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे, यानी कि एक डेटा बेस जो है वो उसको हैंडल नहीं करते। ऐसे डेटा को हम बिग डेटा कहते हैं। ऐसे डेटा को हैंडल करने के लिए हमें डिफरेंट आर्किटेक्चरल अप्रोच चाहिए पड़ती है। हम मशीन लर्निंग मॉडल को लाइव डेटा के साथ एम्बेड करके अपने पावर BI या Tableau में एब्सोल्युटली लगा सकते हैं। आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ये मैं थोड़ा सा इंट्यूशन दूंगा कि जब हम डेटा कलेक्ट वाली साइट पे जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पे आपको इंट्यूशन दूंगा इस बारे में, बट ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। अजहर आई गेस इनसे पूछ लें, इज ही टॉकिंग अबाउट स्ट्रीमिंग डेटा और लाइव डेटा, दोनों में बहुत डिफरेंस है? जी लाइव इज लाइव। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनका मतलब स्ट्रीमिंग डेटा ही होगा। पावर BI में लाइव दिखाना चाह रहे होंगे तो ऑफ कोर्स स्ट्रीमिंग डेटा यही है
कि आप समझ लें कि आप यूज़र नेटफ्लिक्स के ऊपर हम जब किसी के ऊपर हम जो है मूवीज़ एक्चुअली कर रहे होते हैं, हम स्क्रॉल थ्रू कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली इंटरेक्शन लेवल एक व्यू लेवल के ऊपर, एक इम्प्रेशन लेवल के ऊपर, जैसे ये कोई मूवी हमारी स्क्रीन के अंदर, मूवी का थंबनेल हमारी स्क्रीन के अंदर इंटर होता है, वैसे ही हम एक इवेंट जनरेट कर देते हैं और वो इवेंट एक्चुअली जाता है और जाके हमारे ऑफकोर्स जाके हमारे रिकमेंडर सिस्टम्स के अंदर रियल टाइम के अंदर प्रोसेस होता है। वहाँ से वो हमारी जो सजेशन होती हैं, जो रिकमेंडेशन होती हैं, उनको रियल टाइम में अपडेट करता है और वो हमारे पास यहाँ पे आके शो हो रहा है। और पावर BI ऑफकोर्स सपोर्ट करता है जितने भी जो डेटा सोर्सेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज हैं, जैसे एजूर के अंदर मैं कोशिश करूंगा, बट ऑफ कोर्स जब हम NoSQL की मॉडलिंग देखेंगे ना, तो उसमें हम अपाचे कैसेंड्रा को देखेंगे। अपाचे कैसेंड्रा स्पेसिफिकली जो है वो हम इस तरह के यूज केसेस के लिए हाई अवेलेबिलिटी और इस लेवल के थ्रूपुट के लिए डिजाइन किया गया था। तो सर ये डॉक्टर साहब ने एक क्वेश्चन किया है, डॉक्टर यासिर साहब ने, बिग डेटा जो होता है वो टीबी में होता है। तो मेरा ख्याल है कि बिग डेटा वो डेटा होता है जो आपका रजिस्टरिंग सिस्टम जो है उसको प्रोसेस ना कर सके, उसको स्टोर ना कर सके। मतलब ये जरूरी नहीं है कि टीबी में अगर कोई डेटा है तो वो बिग डेटा होगा। कोई भी डेटा जो आपका रजिस्टरिंग सिस्टम जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको स्टोर ना कर सके। लाइक मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर मैं कोई सिंपल टेक्स्ट फाइल जो 2 TB की है या 1 TB की है, उसको मैं स्टोर नहीं कर सकता, उसको कोई किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो बिग डेटा की सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि कोई भी ऐसा डेटा जो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, जिस तरह वेलोसिटी की बात कर रहे थे, वैरायटी की बात कर रहे थे, और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, स्टोर नहीं कर पाता, वो आपका बिग डेटा। जी अगर आप कंटिन्यू करें। थैंक यू जी। फिर जनाब सवाल है कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, सॉरी मैं आपका इस सवाल पहले मुझे करना चाहिए था। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जो जिसका एक स्कीमा अटैच होता है। आप एक एक्सेल की फाइल को अगर विजुलाइज करें, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर रोज होती हैं, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के कुछ नेम होते हैं, यूजुअली कॉलम्स की कुछ डेटा टाइप्स भी होती हैं। द पॉइंट इज उसका कोई स्ट्रक्चर, कोई स्कीमा अटैच होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर, या आप ये डेटा इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। दिस डेटा मतलब आई होप आई एम ट्राइंग टू कन्वे माय इंट्यूशन टू यू गाइस। तो जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है वो उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे अगर आप एक JSON की फाइल अगर आपने देखी हो, या अगर आपने XML की फाइल देखी हो, HTML की फाइल देखी हो, उसके अंदर टैग्स होते हैं और टैग्स के अंदर कुछ हायरार्की होती है। आप टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर टेबल रोज होती हैं। तो पॉइंट इज के उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, बट उस लेवल का स्ट्रक्चर नहीं होता जिस लेवल का स्ट्रक्चर हम एक एक्सेल की शीट या एक SQL डेटाबेस के टेबल के से एक्सपेक्ट करते हैं। और जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट इज कि वो वीडियो हो सकती है, इमेजेस, म्यूजिक, वो ईमेल्स एंड व्हाटएवर इट इज। तो ये है। ऑफ कोर्स वेब डेटा यूजुअली होता है वैसे लॉग्स। वेब डेटा जो होता है ना वो यूजुअली लॉग्स की फॉर्म में जनरेट होता है। JSON फाइल्स होती हैं, बड़ा मैसिवली जनरेट होती हैं। तो आई वुड से वेब डेटा कॉमनली सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, बट ऑफ कोर्स हम उसके साथ जैसे ही डेटा इवेंट जनरेट हो रहा है, हम उसके साथ कोई स्कीमा अटैच कर देते हैं। दैट मीन्स कि वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा। ऑफ कोर्स और कोई अगर एक लेमैन एग्जांपल अगर इनको दे दें तो आई गेस इट वुड बी क्लियर इनफ। बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में अगर आप लेट सपोज जैसे कोई इमेज क्लिक करते हैं एंड इट्स इन योर मोबाइल, तो उसके साथ बहुत सारी अटैच्ड इंफॉर्मेशन भी आपके साथ होती हैं। लेट सपोज की जियो टैग लोकेशन होती है, आपने किस टाइम पे ली, आपने किस डेट पे ली। बेसिकली इमेज जो है वो तो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बट आपने जो उसके साथ डिटेल्स अटैच की वो डिटेल्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड हैं। तो उनको आप इस तरीके से रख सकते हैं कि जहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। एक इमेज के साथ मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं, उनके बीच में डेलिमिटर होता है जिससे आप ब्रेक कर सकते हैं। दैट वुड बी सेमी स्ट्रक्चर्ड। Alright, sure, thanks yaar. Then is there any difference between data analyst and data engineer? ये वैसे काफ़ी ये डिपेंड करता है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कितनी। वैसे तो हम सिर्फ अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी कह दूँ मैं,
तो थोड़ी सी सेग्रीगेशन होती है ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वैसे जो है वो ये रोल्स जो हैं वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स सीक्वल जो है वो सबको आनी चाहिए, तो डेटा एनालिस्ट को भी आनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ ओवरलैप, स्किल्स ओवरलैप इन ऑल दीज roles that has been kind of roaming around our social media. तो डेटा एनालिस्ट का मेन रोल जो होता है वो एनालिटिक्स और वो विजुअलाइजेशंस और जो डैशबोर्ड और इनफैक्ट कोई कस्टम एनालिसिस भी हो, जैसे थोड़ी सी डेटा साइंस से मिलती जुलती अप्रोच लेके भी वो काम कर सकता है। बट डेटा इंजीनियर जो होता है ना, वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ी कंपनी जो है वो उसके अंदर डेटा इंजीनियरिंग ही कर रहा होता है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होता है, उसने पाइपलाइंस बनानी है, उसने वेयर हाउसेज बनाने हैं, उसने डेटा को अवेलेबल करना है डेटा एनालिस्ट के लिए। तो दैट्स आई थिंक आई मीन हेडलाइंस आर देयर। अगर आप जैद आप या इवन एनी ऑफ यू मुस्फिरा और दानिश, इफ यू गाइस कैन ऐड समथिंग, बिकॉज़ या इतना कोई डिफरेंस नहीं होता डेटा इंजीनियर और एक डेटा एनालिस्ट में एक्चुअली। ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइजेशंस ये चीज़ वेरी करती है। अगर आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर जाते हैं, आई थिंक अगर हायरार्की वाइज देखें तो डेटा एनालिस्ट इज अ बिट लो देन अ डेटा इंजीनियर, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक जेडी दी जाती है या एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं जिनकी बेसिस पे उसे रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट करके बिटवीन डिपार्टमेंट जो है वो शेयर करती है। डैशबोर्डिंग इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड रिपोर्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो इंस्टेड डेटा इंजीनियर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसकी जेडी में बेसिकली ETL हैंडलिंग होती है, उसके अंदर डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर आपको कोई डेटा एनोमलीज नज़र आती है तो बिजनेस से इंटरैक्ट करके उन एनोमलीज को निकाल कर डेटा को क्लीन करके रखना, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेटा इंजीनियर। मिलती जुलती हैं, बट यस अगर आप हायरार्की वाइज देखो तो अ डेटा इंजीनियर इज अ बिट अबव देन अ डेटा एनालिस्ट। या तो एक सवाल है जी, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस सेव ओनली स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड बिग डेटा कैन सेव स्ट्रक्चर्ड। अब ऐसे कैन सेव, तो वैसे हम आजकल जितना वैसे जिस लेवल की अपडेट्स आ गई हैं नहीं कह सकते, बट आप ऐसे जरूर कह लें कि अब एक वर्ब अटैच कर लें डील विद की। जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं